I am not allowing anything. Now we are going to question number 91. Dr. K. Lachmanji. Question number 91, sir. Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House, sir. Now, Dr. Lachmanji, first supplementary, please. Sir, under the visionary leadership You of our can't disturb the beloved House. Prime Minister Narendra Modi ji, Please bite it. the coal Please sector, bite it. public sector unions Rajaji, please bite it. public sector undertakings have recorded strong capital investment movement. During the first quarter of financial year 2025-26, PSUs together achieved about 114% of their targeted capital expenditure, reflecting timely and effective execution. Through Singareni Collieries Company Limited, Telangana continues to benefit from sustained investments, employment generation, infrastructure development, strengthening both regional growth and national energies. Through you, sir, I would like to know, could the minister share the specific benefits including infrastructure Nothing will go on development, record skill except creation and the employment questions. opportunities that these capex initiatives have generated in coal production regions like Telangana, particularly in enhancing local economic growth and supporting community I am well-being. sir. respecting him more than what you are. Don't try to teach the share. Don't try to teach the share. I know I am respecting him more than what you are respecting. I am always respecting him. Yes, please, sir. Please, Honorable Minister. Sir, capital expenditure at any given point of time in any particular sector, including the country overall, is a very good indication of the indicator of the kind of progress that is being made. Sir, I would like to reiterate what the honourable member has said insofar as the coal sector is concerned. Sir, the capital expenditure incurred by the question the three ruling of the public sector chair. coal units No, I will not has allow in you. fact I am gone not up allowing you. year to on discuss the year. same thing. They No. have always succeeded in exceeding their targets. And last year, sir, it was 140% more than the Nothing targeted amount. should go on record. Nothing should go on record except the minister's answer. Sir, the issue today is that apart from the 31,000 crores of capital expenditure that has been incurred in fiscal year 24-25, we should see that it has gone up from 2020-21 when it was 17,500 crores. It has gone to 31,500 crores in these 2 years. Sir, in addition, the country has witnessed record production of coal. It has crossed 1 billion tons of coal production for the last time, and it has gone up from something like 500 million tons to over 1,000 million tons, sir. This has resulted in reduction of imports. Sir, apart from the capital expenditure incurred by the PSUs in the coal sector, I would also like to add that the budget which was presented by the Honourable Finance Minister indicated a massive increase in capital expenditure for the country overall. Sir, in 2014, the country's budget provided for something like 2 lakh crores by way of capital expenditure. Last year, sir, it had gone up to 11 lakh crores. And some people like me used to wonder, will we be able to absorb and spend 11 lakh crores? So this year, the capital expenditure has gone up to 12 lakh crores. Add to that, sir, what is made available to the states through the Finance Commission, and you will see that's another 4 lakh 50,000 crores. It's something like 17 lakh crores. Then you add the sectoral capex by the PSUs. You have 30,000, 31,000 crores by the coal PSUs. Sir, in my own sector, the oil sector, the OMCs, our PSUs are called oil marketing companies. You should They are, sir, maintain also the incurring discipline 1 in lakh, the house, then I am 1 crore allowing 20 anything. lakhs. You don't have that 1 lakh discipline. 20 crore by way of capital. So it's a massive amount of capital expenditure which is being incurred in the country. Sir, this sustained overachievement from targets, despite coal sector being marred with various bottlenecks, makes the coal sector PSUs amongst the top performing PSUs in the country. Sir, insofar as the state of Telangana is concerned, as my honourable members are, one of the companies there, which is a PSU, is incurring at an annual 1,600 crores a year by way of You please go back to your seats. capital expenditure. This results in both direct and indirect employment
In fact, some various sums have been done. You please whereby- kindly go back to your seats. Continue. Honorable Minister, you please continue. Sir, whenever capital expenditure is incurred, no matter in which sector, infrastructure is built, modernization takes place, jobs are created directly and indirectly. In the case of the facility in Telangana, sir, I think if I remember correctly, they are employing 42,000 people directly and another 16,000 or so by way of contract workers. So it is direct and indirect employment. Sir, in capital expenditure, you used cement, steel, so the production goes up, employment there goes up. All in all, I can say, sir, that overall in the country, you can see, apart from the central government's allocation of capital expenditure, which has gone up to 12.2 lakh crores, what is going to the states through the Finance Commission, another 4.5 lakh crores. What is being done by the companies in the coal sector, sir, 31,000 crores. And I would also like to add, sir, 18% of the coal production in the country is in the private sector. They are also incurring capex. So it's a situation in which the capital expenditure is contributing to the overall economic activity in the state, in the country also overall. And this has resulted in mining expansion and mechanization, first mile connectivity, railway sidings and logistics, thermal power capacity, renewable energy and coal gasification, and what is most important in a sector like coal, sir, it also helps in employee welfare and infrastructure, sir. Second supplementary, Dr. K. Lakshmanji. Sir, my second supplementary is very specific and pertinent, sir. Whether the investment in renewable energy by coal PSUs indicate a structured transition strategy rather than ad hoc diversification. No. Sir, thank Nobody you. can force the chair. Nobody has the right to force the chair. Sir, I think that's a very relevant question which the honourable member has asked, and I think the answer is also very clear, sir. In a sector like coal, Nothing will go on record except in the the minister's answer. Sir, in a sector like coal, one has to ensure both safety, the cleaning of the current processes, and then also last mile connectivity and also then transition, sir. And I think it's a very relevant question he's asked, sir. In the diversification into renewable energy, the coal PSUs have already installed about 2 gigawatts of renewable energy capacity and have a strong pipeline of about 22 gigawatts across solar, wind, hybrid and solar projects. The NLCIL, Neyveli Lignite, leads with 1.6 gigawatts installed renewable capacity, over 2 gigawatts under implementation, and a long-term plan of 10 gigawatts by 2030. Also, sir, NLCIL, that's in Neyveli Lignite, CIL, is the first central PSU to cross 1 gigawatt and has achieved net zero. Also, sir, the same company is developing a 250 megawatt or 500 megawatt edge battery energy storage system. Sir, I could go on giving the contribution that the coal sector companies are doing for energy diversification. But I think this is captured and it is leading to transition. But clearly, sir, in a country which is on the move, if you look at the sustainability transition, sir, when the Honorable Prime Minister assumed responsibility in May 2014, we were only blending 1.4% of biofuels. Today, it has come to 20% biofuels. If you look at the area of green hydrogen, sir, we have a target of 5 million tons by 2030, and I believe even that will be met. So the question that the honourable member has asked and the details I have given about the green energy, or rather this diversification into renewable energy, these are all very valid. I personally feel, sir, there was a debate when you said close down coal, close down fossil fuel. There was an international thing that, we should move straight to renewable energies. But, sir, to move from the current situation to renewable energy, which must be available, and I have seen global estimates, sir, whether it's in the International Energy Agency or the BP Outlook, they say that our coal demand is going to increase in the next few years. In fact, it's saying by 2030 or so, it should go up by 17%.
So while simultaneously we are cleaning the processes in coal, simultaneously whilst we are producing more, saving foreign exchange, we are also doing green energy movement into solar energy. There is also a lot of work being done on coal gasification, coal bed methane, and the other areas. I thank you, sir. Third supplementary, Dr. Lakshmikant Vajpayee ji. माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस ऑफ द कोल पीएसयूज ओवर रिसेंट ईयर एंड हाउ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल स्टैंड्स इन द कंपैरिजन ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज in terms of capex achievements? Honorable Minister. Sir, insofar as the coal ministry is concerned, sir, with all humility, I say that I'm standing in for my colleague, Shri Kishan Reddy ji, who couldn't be here today. I want to pay him a compliment that in relation to the other ministries, the coal ministry has done very well. It has incurred 31,500 crores of capital expenditure, very good. But sir, with all modesty at my command, the coal sector is very different from others. So I should not compare that with the capital expenditure which my ministry, Petroleum and Natural Gas, the ministry with which I am associated, ours is higher. It's about 4 times, 1,20,000. But sir, our operations are much larger. And I think it's very creditable for the coal ministry to have 31,000 crores as capital expenditure, and it is visible. It is visible in the last mile connectivity. It is visible in the railway processing. It is visible in the solar energy transition that they're making. Their companies, there are only 3 companies, sir, as far as I know, and all 3 of them are doing very well on capital expenditure. And to answer my colleague, the honorable member, they are doing very well in comparison to other public sector companies which are under different ministries. Yeah. Fourth supplementary, Shriman Brijlal ji. Thank you, Chairman, sir. My question from Honorable Minister, whether the investment in renewable energy by coal PSUs indicate a structured transition strategy rather than an ad hoc diversification. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, it is a structured strategy. What invariably happens, sir, is that all PSUs, the ones I am familiar with, which are dealing with the energy sector, they declare a date for net zero. The companies with which I am more familiar, like the oil marketing companies, they have about a net zero target by 2040 or 2045. So when you adopt a strategy, it has to lead in that direction. That you start a process now. Now I know in the coal sector, some of those net zero targets are a little closer. They are in 2030. So if you look at the overall figures, they may appear small now. But sir, if you look at the solar energy supply chain, it also is very cumbersome. So I am very confident. One, I can be very sure it is a consciously thought through strategy. It's not something that is done ad hoc. If there is a strategy to become net zero by a particular year. 2070 power. No, 2070 is a national target. My senior colleague Manohar ji just reminded me, totally correct. Sir, we set a national target of net zero by 2070. When the Honorable Prime Minister went to Glasgow, I think, at around that time when we took the 5 commitments, 2070 people said it's too far. No, for a country like India, which has great developmental challenges and which has been traditionally dependent on different fossil fuels, etc. So when I was associated with the Petroleum and Natural Gas Ministry, our daily consumption of crude oil was 5 million barrels a day. Today it is 5.6 million barrels. As we go forward, it will go up to 6 and 6.5 million barrels. Similarly, therefore, our companies, if they declare 2040, ONGC, IOCL, etc., it's a very bold target. Including in the coal sector, they are very bold targets. It may appear that the start is a little slow, but it's a structured strategy, and as we go along and clear the cobwebs, these diversification or movement into clean energy will be cleaned up. They have always, all of them, have been very consciously, whether even if a company is located in Telangana, it's not that it is doing capex in Telangana and providing jobs, 1,600 crores, but this company is also doing solar projects in the rest of the country. Thank you, sir.
Fifth supplementary, Ms. Dolasan ji. Thank you, Chairman, sir, for giving me chance. Sir, through you, I want to communicate the Union Government Treasury Bench that coal is our national asset, but they are trying to disinvest and privatize badly this coal sector and the coal PSUs by any means according to their policy decision. I want to ask that whether it's Atmanirbharata at all, where our national assets are being sold to corporates and the foreign companies even, and it's affecting the nationalized coal industry and coal PSUs and the workers as well. How much capital expenditure and clean energy investments you do for coal PSUs, that doesn't matter. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, I am very intrigued when I have a question which is both a question and then there is an answer in the tail, which says how much capital expenditure you do, it doesn't matter. But there are some other aspects to which my honorable colleague and friend has referred to, that national assets are being sold to corporate this thing. No, 1 minute, let's slow down. If there are 3 PSUs, one is called Coal India Limited, the other one is Singaneri Collieries and Coal and Colliers, the third one is Neyveli Lignite. Are these foreign corporate assets? So these are owned by our own people. And they are the people who are doing this thing. They are the ones who are doing this thing. Insofar as the coal sector is concerned, I must say, my little education in the last 2 days, it's not just the coal PSUs which are doing this thing. There are also private sector people who are running. There are about 86 private projects which are going. And I am not aware, sir, in my long history, 9th year in the Honorable Prime Minister's team, or 39 years as civil servant, I don't recall of any privatization of the coal PSUs. So I don't know what the honorable member is talking about, that we are selling the assets of the coal PSUs to corporate interests or to this thing. Yes, a little bit of illegal mining, not little, quite a lot of illegal mining takes place. That is in spite of us. That is, people go elsewhere. But now land is a state subject, sir. But because of the inherently dangerous nature of coal mining, which is below ground, etc., a center's clearance is required. So I want to categorically state the central government has not, and I say it categorically with my limited knowledge of the sector, we have not sold any assets to corporate entities. I don't recall, I don't think there's ever been a privatization of coal PSUs, etc. And the 3 of them, CIL and LCL, etc., they have all been working and their capital expenditure targets have gone up. So in one case, last year it had gone up by 140% over the existing target, and I also gave the figures in reply to an earlier supplementary, how it has increased from 22, 23, etc. So I think it's a happy story in the coal sector. Yes, we should do away. I mean, she referred to coal as a national asset. But if you're an environmentalist, you should say, by slowly use your coal, produce more, which we are doing. We are importing less. We are saving 60,000 crores, I think, on foreign exchange because of lessening of imports. And today we are in the happy situation. We are also making the transition to solar energy and other cleaner energy, sir. Now question number 92, Sriman Rajendra Gupta ji. Not present. The third supplementary, Dr. Ajit Kopchade ji. ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आम नागरिकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत होने के वाले उतार चढ़ाव से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ठोस और राष्ट्रहित में निर्णय ले रही है। मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भविष्य में सरकार कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार की तरह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, उसके लिए रणनीतिक या बफर भंडारण की व्यवस्था विकसित करने का कोई निर्णय लिया है और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? यदि हाँ, तो आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए माननीय मंत्री जी और मंत्रालय द्वारा
वर्तमान में कौन-कौन से ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाए जा रहे हैं? Honorable Minister. Sir, this specific question, start question priority 2, is on the issue of our strategic petroleum reserves. Sir, for any country, and particularly a large country like India, and a country which is growing at a phenomenal pace, the economic growth, one quarter it was 8.2%, sir, previous quarter it was 7.8%, and according to the IMF, which has enhanced our expected rate of economic growth from 6.6 to 7.3%, the country must have a very viable and secure reserve so that in the case of global turbulence, etc., we should not be found in a vulnerable situation. Fortunately, sir, India has a vast coastline, both on the west and the east. We have several refineries in the west coast, sir, starting with Nayara, RIL in Jamnagar, Mumbai. We have Mangalore, we have Kochi on the western coast. We have Chennai, Tatipaka, Vizag, Paradeep, Barauni, Haldia on the eastern coast. Sir, according to the International Energy Agency, and I'm only mentioning the vast coastline and this thing, because today we are the world's third largest consumer of crude oil. We have the world's fourth largest reserve, refining capacity, currently around 260 million metric tons per annum, going on to 320 million metric tons per annum. And we are also the world's fifth largest exporter of petroleum product. Now, the Strategic Petroleum Reserve is designed to ensure that in case of total global turbulence, in case supplies cannot reach either from the western coast or the eastern coast, we must have enough stock left in order to meet that. Now, fortunately for India, sir, we are also a domestic producer. When I say we are the fifth largest exporter, God forbid, if there was to be an eventuality where no supplies are reaching, we would obviously not then export. We would also utilize our domestic consumption for our domestic production for domestic consumption. Sir, the International Energy Agency stipulates that there should be about 90 days of holding as a strategic petroleum reserve. But I also want to point out, sir, these are estimates largely relevant. I'm choosing my words carefully. I'm not saying they are not relevant for others. 90 days largely relevant for OECD countries, also smaller OECD countries. You know, when there was a global crisis and there was total volatility, the IEA, International Energy Agency based in Paris, it stipulated that countries which had large reserves, they should release some in order to stabilize the global price. So which are the countries which release stocks in differing quantities from their stocks? One was the United States, the other was India, and third was China, and the fourth, I think if I recall correctly, was Japan. So we are in the happy situation that we were able to rise to the situation. Today, sir, we calculate our reserves, not only what is in the caverns, and these are in 3 places. I can't go into precise details, although some people speculate. They are in the states of Andhra Pradesh, in the state of Karnataka, and the third one we are hoping to get started, sir, in Odisha soon. Together, if you look at the reserves in the caverns and what is held by us in our refineries and what is on floating platforms at our ports, together and our products, it comes to 74 days. Ideally, it should be 90, but I feel at least as the line minister safe with something like 74 days, and going forward, we can even consider raising it. The honorable member also raised the issue of price volatility. Sir, this particular question relates to the period 2015 to 2022. So that period between 2015 and 22 is the pre-COVID period. And it also covers the COVID period and till 2022 when COVID was mercifully on its way out. Sir, we filled the current stock at that time, at 2015 to 22, at prices which I may say, because normally we don't discuss the price at which we buy oil, at roughly 50% of the prevailing price today, which is very creditable.
because you bought it at 50% of the correct price. Now you would be making a mistake if you were to buy crude at a price and then, it drops, and then you'd say, well, you made a mistake. You should have waited to buy. So there is always a balance involved. I'm very happy to inform this House through you, sir, that we have been able to weather the international turbulence thanks to the far-sighted and visionary policies of the Honorable Prime Minister. We have been able to ensure availability, affordability, and sustainability, the trilemma of energy. And today, whether it is a question of biofuels, a reference was made in the question also to liquefied petroleum gas, our production is going up. We are also signing international arrangements. When the president of the UAE, he was here recently, sir, we signed another deal with them. We are importing about, I think, $9 billion worth of natural gas from them. We are also importing from Qatar, from other countries. Also, sir, we have a situation on petroleum gas, liquefied petroleum gas, which is a cylinder gas, which is a product of a refinery. We also signed an agreement with the United States, sir, for buying 10% of our requirements from there. So overall, sir, the Strategic Petroleum Reserve is a very important component in our economic security. And economic security means that a democratically elected government, and the Prime Minister feels particularly responsible to the common man, the Aam Aadmi, that the prices should be at lowest level, and they are lower today than in most parts of the world. In fact, cooking gas has been supplied, I got the note in hand, cooking gas, which is in cylinders, sir, there was, in 2014, we had 14 crore connections. And if 1 crore connection is for a family, it's gone up to 33 lakh connection. And if there are 4 people in a family, we've virtually saturated the country. In addition to that, that is being supplied to Ujjwala beneficiaries, sir, for as little as 5 rupees in a day. And if the beneficiary is not an Ujjwala beneficiary, but a non-beneficiary, he or she is also getting it in his or her kitchen for as little as 13, 14 rupees per day. This is a very reasonable price. Our oil marketing companies incurred a loss in doing that, but we compensated them, and with God's grace, sir, they're all doing well. So all in all, sir, this is a very important component of our energy security, Strategic Petroleum Reserve, and it has worked very well. The 74 days of stockholding we do, sir, we just don't keep it there. 50% of it is also available for trading. And if there were to be a requirement, Government of India would have the first claim on it. But because if you keep too much of stuff in your godown or basement, then it seems unproductive. But we use 50% of this also to supply the country's needs and for trading. Thank you, sir. Next supplementary, Shriman Mastan Rao Yadav Bidaji. Thank you for giving me opportunity to raise a supplementary question, sir. So the recent discovery of natural gas reserves in Andaman offshore area has therefore generated expectation of strengthening domestic production. In this context, I would like to ask the Honourable Minister through you, sir, whether any timeline has been set for the full appraisal of these reserves and be brought into production so that the development process can be commenced with the aim of reducing import dependence from other countries, sir. Thank you, sir. Honourable Minister. The honourable member for asking this question. Whenever a petroleum natural gas minister appears for an examination, he is hoping this is the question which is asked, because it also provides us an opportunity. But before I go to the Andaman Nicobar Islands discoveries or the Krishna Godavari bases or Mumbai High, I just want to make a few comments by way of an introduction. Sir, petroleum and natural gas exploration and production is by definition a long-term process. It has a big gestation period and it is heavily capital intensive. In the years between 2006 and 16, sir, when another government was in office, no work was done on exploration and production, sir. We were in the unhappy situation that people used to give us pious homilies and preach, why do you want to do E&P? There is enough gas and oil available in the global market. It's cheaper to buy. Sir, I don't like to use language like this, but it is very, very clear that these were people representing some other interest. They did not have the national interest at heart. So when Modi ji
the Honorable Prime Minister assumed responsibility in the year 2014. He changed it, and from 2016, the dead decade came to an end, and we started changing our policy. We went from production sharing agreements to revenue sharing agreements. And to give the honorable member an example, sir, in Guyana, which is one of the biggest finds of oil and gas in the world, they dug 46 wells, each one costing more than 100 million, 1,000 crores. It was on the 47th well that they found it. And lo, then the history changes. So insofar as the Andaman and Nicobar area is concerned, I just want to say the geographical location is such, it comes from Indonesia, right where Myanmar is, and then comes down. We have dug 3 or 4 wells there. Each time we have dug, we have found oil or gas. And we have sent it for seismic. So we have to go on doing this, because we did 17 kilometers to the west of the Andaman Islands, we found oil and gas. We did 18 kilometers to the east, we found oil and gas. But the trick, or rather the challenge, is to find where the vertical linkages are so that you can find the point at which you get the maximum economic result. Sir, this is all very expensive process, but I can share with you that the Prime Minister launched, it's well known, the Samudra Manthan program, which was announced by him, and deep water spells spudded in ANN Islands by ONGC and OIL. All of them have been successful, except that we need to do more to find out where a really big this thing, because it's very high cost. And if you spend a lot of money and go into one spot, you will find you spent the money, maybe the economics are not worth it. But its area is rich, and once we find that, in fact, my ministry did a review, a presentation before the Honorable Prime Minister, not only because of the Samudra Manthan program announced by him, but his instructions to us are very clear. This is a national interest. Go ahead. 125 kuh khodiye. And go ahead every year. So we are going to increase the number of things, no matter what the cost, thanks to the Samudra Manthan and the budgetary outlays and our own oil marketing companies, those which are in the upstream, they will also put their resources. It is very positive, except that every time they do something, they have to report it to the Directorate General of Hydrocarbons and also to the stock market, etc. This is a process which will go on. Meanwhile, we are doing well in the Krishna-Godavari basin, sir. I think the gas per day has gone up to 55,000 barrels of oil. Gas has also gone up. Bombay High, where there's a rejuvenation of the ONGC earlier facility, which was, I think, 1976 or so. There also BP is trying to revive it, and they're also very positive. So it's a positive outlook scenario in total terms, sir. Fifth supplementary, Shriman Mayank Nayak ji. थैंक यू चेयरमैन सर। सर, ये पेट्रोलियम भंडारों का जो प्रश्न है उसको साथ में महसाना गुजरात में ओएनजीसी में पिछले कई सालों से ऑनशोर पे सबसे ज़्यादा ऑयल निकालने वाला क्षेत्र है। पूरे उत्तरी गुजरात में महसाना, पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर, साबरकांठा, ये सभी जिलों में सबसे ज़्यादा ऑयल क्रूड निकलता है। मेरा माननीय मंत्री से पूछना है, क्या सरकार द्वारा उसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री, कोई रिफाइनरी लगा के वहाँ के लोगों का रोजगारी मिले? ऑयल वहाँ से पाइपलाइनों के द्वारा दूसरी जगह पे रिफाइनरी में जाती है, तो वहीं डाल के जो जाने का खर्च है वो भी सरकार का बच सके, और उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लेवल में पिछड़े हुए हैं, पाटन, बनासकांठा वगैरह में, तो वहाँ ऐसी इंडस्ट्री और रिफाइनरी डालने का माननीय मंत्रालय का कोई विचार या सोच है, वो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। Sir, I have a map of It's not India. belong to you or our party. Sir, I have a map of India. Sen is not belong to your party. No, please. Please, Sir, this is only 3 supplementaries. Sir, I have a map of India in front of me, which shows all the refineries, sir, from Batinda, Panipat, Mathura in the north, Rajasthan, Barmer, which is coming up. It has several in Gujarat and West India,
And the Gujarat refinery, sir, if I may say, Nayara is what, 20 million metric tons per annum. The Reliance in Jamnagar, one of them is 35 million metric tons, and another one is 33. Then you go to Mangalore, Kochi, Chennai, Trivandrum, all over the country. Sir, a refinery by its very definition is a very big capital investment. We already have 260 million metric tons per annum. Now, if I were the member from Mehsana as my friend, I would also want it in my constituency. But if there are several refineries in the area, we can't multiply. Now, if I were to look at the current map, it's very evenly distributed. And the capacity of these refineries, sir, is going up to 320 million metric tons per annum in any case, through the autonomous processes which are there. And the kind of plans that I hear from our industry, they in fact show that it will go up to 400 million metric tons per annum or even higher. Sir, in a few years' time, the global scenario will be characterized by only 3 or 4 countries which will have such refineries. India is already the world's 4th largest refiner. And I think going ahead, I see these small teapot, I shouldn't call them tin pot, teapot refineries in different countries, they will no longer be viable. So India will be. But that doesn't mean, sir, that we have to proliferate them, too many in one area. So I deeply respect the sentiment of an MP who says there is oil here, therefore. Well, oil can be extracted and processed in a refinery nearby. So my humble submission is, sir, I don't think that area lends itself for another refinery now, because we've already got several in the area in Gujarat, and if you go to Western India, Mumbai, etc., we are there also. So I think we are on refineries in terms of location fairly well situated. We are only going to be increasing the capacities of some of them in order to integrate them for the production of petrochemicals and so on. I thank you very much, sir. Question number 93, Sriman Neeraj Sagar ji. प्रश्न संख्या 93. Honorable Minister. It is laid on the table, sir. The first supplementary, Sriman Neeraj Sagar ji. सभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत सरकार ने करीब 1.25 करोड़ शहरी आवास बनाने का अपना गंतव्य रखा है और उसमें से करीब 90 लाख आवास बन चुके हैं मार्च 2025 तक। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश तथा उससे जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवासीय आबादी को ध्यान रखते हुए PMAYU 2 के अंतर्गत किराए के आवास के लिए कौन सी विशेष प्राविधान किए गए हैं और उनका लाभ कामगारों की ज़मीनी स्तर पर कितना हो पाया है? Honorable Minister. सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास, इस योजना के अंतर्गत और PMAY योजना की शुरुआत ये 2015 में की थी। और जैसा हमारे आदरणीय सदस्य महोदय ने बताया है कि इस समय तक कुल 94 लाख लोगों को और मकान उपलब्ध हो चुके हैं। पहले जो योजना तय की गई थी उसके कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स जो है वो तय किए गए थे, जिसके अंदर बेनिफिशियरी लेड स्कीम, अर्थात जिनके पास अपना प्लॉट है वो गरीब आदमी भी उस प्लॉट के लिए और आर्थिक सहायता लेकर के और उस पर अपने मकान बना सकते थे। इसी प्रकार दूसरा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं होती थी उनके लिए ऐसे वर्ग को और एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत सस्ते दामों पर और वो मकान उपलब्ध कराए जाते थे। इसमें केंद्र की ओर से 1.5 लाख रुपया और ये दिया जाता था, लेकिन संयोग ऐसा कि उसके अंदर प्रदेशों का कोई अंशदान ये नहीं तय किया गया था। प्रदेश अपनी ओर से जो उसमें योगदान घोषित करना चाहते थे वो करते थे। कुछ प्रदेशों ने किया जहाँ अच्छी संख्या में वो लोग मकान ले करके और पब्लिक को दे सके, जिन्होंने नहीं किया वहाँ ये कमी रह गई थी। इसी प्रकार तीसरा जो था उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये MIG और LIG लोगों के लिए जो अपना पैसा खर्च करके मकान बनाते थे, बैंक से लोन लेते थे, उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी ये दी जाती थी ताकि उनको भी एक लाभ मिल सके। और अंतिम कैटेगरी थी
जो इन सीटू स्लम डेवलपमेंट ISSR, अर्थात जो लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठे थे उनके लिए इन सीटू मकान दिए जाए। संयोग ऐसा हुआ कि इन सीटू मकानों का निर्माण ये करने के लिए भी योजना बनी, लेकिन बहुत कम लोग ये आगे आ पाए क्योंकि झुग्गी झोपड़ी लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं था और इसमें सरकारी सहायता भी 1 लाख रुपया थी। तो बहुत प्रदेशों ने इसमें अपनी रुचि कम दिखाई, तो इसलिए PMAY 2 में इसको बदल दिया गया और बदल करके इसमें अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग इसका प्रावधान किया ताकि लोग अपना मकान अगर नहीं भी ले सकते तो एक जितना कम से कम किराए में वो लोग रह सकते हैं, उनको किराए के मकान ये उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार से इस योजना में एक परिवर्तन करके और ये 2 में लाया गया। अब कठिनाई ये आई कि आखिर ये औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाली जो प्रवासी आबादी के जो लोग थे इनको कौन सी योजना का लाभ इसमें मिले। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत और ये लोग अपना लाभ उसमें उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रवासी लोग स्थायी रूप से निवासी एक स्थान पर नहीं होते तो उनको भी संकोच होता है कि हम अपना मकान वहाँ न बनाएं, जब आवश्यकता हो तो यानी किराए पर हमको उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे सस्ते किराए पर और ये मकान इनको मिले। तो इसलिए PMAY 2Y में इसका प्रावधान जो किया गया कि वर्कर को अलग से एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम इसका वर्टिकल ये बनाया गया है और मैं समझता हूँ इसका पर्याप्त लाभ उनको मिला है। और आवास का जो स्वामित्व नहीं चाहते थे अल्पकालीन अवधि के लिए उनको किराए के आवास की ये योजना इसका लाभ मिलता है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान नीरज सागर जी। सभापति जी, मैं सरकार ने जो शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत परमानेंट शेल्टर बनाने की जो सराहनीय काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या राज्य सरकार PMAY 2 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी विकास परियोजनाएं प्रभावित कर सकती है? और ये इसलिए क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। अगर उनको पक्के घर मिलें तो इन जमीनों पे क्या प्रस्तावित कर सकती है आपकी योजनाएं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, ठीक चिंता व्यक्त की है अपने सदस्य महोदय ने कि बहुत से ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट में अथवा झुग्गी झोपड़ी बना करके वो रहने लग गए हैं। उसमें इन सीटू बनाने के बाद भी उसमें आते नहीं हैं। BLC उसमें प्लॉट होना उनके लिए अनिवार्य है। तो बहुत सी प्रदेश सरकारें ज़मीन का आवंटन ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को करते हैं ताकि ज़मीन मिल जाए तो फिर वो BLC प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आ सकते हैं। साथ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसमें भी उन लोगों को चूँकि अब राशि ज़्यादा मिलती है, यानी PMAY 2 में पहले जहाँ 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था उसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार भी देगी, तो 2.5 लाख रुपया उनको मिलने के बाद वो अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है उसमें भी उनको मकान मिलता है। फिर भी यदि ज़मीन प्रदेश सरकार देती है तो ठीक है, अन्यथा बहुत से ऐसे CPSUs हैं, SPSUs हैं जिनके पास जो ज़मीन में भी डील करते हैं, ज़मीनें अपनी होती हैं, उनको भी प्रावधान किया गया है कि वो हाउसिंग स्कीम के लिए अगर अपनी ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए उस ज़मीन का उपयोग किसी भी स्कीम में करके उनको मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि आखिर तो हर किसी को मकान मिले। बहुत से प्रकार ऐसे बनाए गए हैं और आगे भी जिस प्रकार के यानी हम हमारे पास सुझाव आते हैं कि कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, होमलेस को कैसे मकान मिले, इसके लिए अलग अलग से योजनाएं जो बनाई गई हैं, इसमें अन्य भी कोई सुझाव अगर आते हैं उस पर भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री मिस स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, JNNURM स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों की लागत से दिल्ली में 52,344 फ्लैट्स गरीबों के लिए 2016 में बनाए, लेकिन सर आज तक इनमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 4,871 फ्लैट्स ही गरीबों को आवंटित किए, बाकी सारे घर पड़े पड़े खंडर बन गए हैं।
सर मैं खुद इन घरों को देखकर आई हूं, ये बहुत अच्छे खासे बड़े फ्लैट्स थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर तब की दिल्ली सरकार ने ये घर गरीबों को इसलिए हैंडओवर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कीम में नाम में मुख्यमंत्री शब्द ऐड हो। सिर्फ इतने से क्रेडिट वॉर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ और गरीब ही रह गया। Sir, I want to ask the Honorable Minister whether the government is planning to register an FIR against the then Delhi government for blatant wastage of government funds. Also, अब उनके कोई plans है इन flats को ठीक करके गरीबों में आवंटित करने के लिए? कब तक सर ये flats, अच्छे खासे flats ऐसे ही पड़े रह जाएंगे? Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये बात ठीक कही है हमारी सदस्य महोदया ने कि 2012 में इस स्कीम के अंतर्गत JNNURM के मकान बनाए गए थे। इसमें प्रदेश सरकार का भी अपना रोल था, केंद्र सरकार का भी उस समय का रोल था। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि 2012 के बनने के बाद भी प्रदेश सरकार आखिर 10 साल 12 साल मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि हमारी बहन सदस्या उसी पार्टी के साथ उसी सरकार के साथ शामिल थी, लेकिन आज इनकी भी इच्छा है कि उसकी कोई इंक्वायरी कराई जाए और कमेटी बैठा करके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो मकान पड़े पड़े बिना आवंटन के और मुझे लगता है शायद 30,000 से भी ऊपर वो मकान आज भी हैं। 48,000 मकान आज भी हैं और उसमें इतने सालों के बाद वो खंडर भी हो चुके हैं, कई जगह रहने लायक नहीं है। अब उसकी मुरम्मत कराने के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है कि जाके जो झुग्गी झोपड़ी के लोग उसमें जाकर रहना चाहते हैं, इस लेवल के बनते हैं, उनको तो वहाँ रखा जाएगा और जो लिवेबल नहीं है उसकी जांच करा करके उसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा। बाकी जैसा सुझाव इन्होंने दिया है इस पर विचार करेंगे कि उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या करें। 4th supplementary, श्रीमान सुभाषिष कुंदिया जी। जय जगन्नाथ। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा को प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने फंड्स एलोकेट किए हुए हैं और उनमें से कितना यूटिलाइजेशन हुआ है? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, देश भर के अंदर तो मकानों की संख्या जैसे बता गई कि 1,12,000 ऐसे यानी सैंक्शन होने का था PMAY 1 में, और उसमें से 90 लाख से ऊपर 1,12 लाख और 90 लाख से ऊपर आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन चूंकि ये प्रश्न इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी जो 3 वर्ष में यानी पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा मेरे पास है, स्टेट बताई उड़ीसा के अंदर पिछले 3 वर्ष का अगर मैं इनको हिसाब बता सकता हूँ, चूँकि प्रश्न ही 3 वर्ष का आया था, तो 3 वर्ष के अंदर उड़ीसा में 22-23 में 1325 मकान, 23-24 में 27,740 मकान और 24-25 में यही मकान 5,304 मकान, इतने सैंक्शन हुए। कुल आंकड़ा उड़ीसा का सैंक्शन हुए 2,23,000 मकान, ग्राउंडेड हुए 1,92,000 मकान, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1,69,000 मकान, ये सब अप्रोक्सीमेट संख्या। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो गई है 10,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट यहाँ सैंक्शन हुआ था, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस वो 3,484 करोड़ रुपए की थी। तो इस प्रकार का उड़ीसा का ये आंकड़े हैं। श्रीमान सतपाल शर्मा जी। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ जानकारी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भी हमारा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग भी जो हैं वो बहुत मात्रा में मौजूद हैं। कुछ फिगर्स आपके माध्यम से जो यहाँ पे आपने जैसे उड़ीसा की फिगर्स माननीय मंत्री जी ने पढ़ी हैं, मुझे कुछ ध्यान आया है कि शायद इन फिगर्स में जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी हो सकता है संशोधन करने की आवश्यकता हो। मंत्री जी इस विषय को देखेंगे। लेकिन यहाँ तक प्रश्न
मकानों का है और परमानेंट शेल्टर्स का है। 1995 शेल्टर जो है पूरे भारतवर्ष में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में और वो भी जम्मू में मात्र 2 शेल्टर्स जो है गरीबों के लिए बनाए गए हैं, जबकि हम समझते हैं कि भिखारी भी और गरीब तबके लोग भी होते हैं जिनके लिए शेल्टर्स आवश्यक होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस फिगर्स को भी बढ़ाया जाए। और 4 प्रदेश में ऐसे देख रहा था, जम्मू कश्मीर भी हमारी स्टेट थी पहले, अभी यूटी में कन्वर्ट है, लेकिन लगभग 4 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, जिसमें लाख से भी ज़्यादा मकान जो हैं वो बने हैं। लेकिन यहाँ तक 3 साल का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में मात्र 19,375 मकान जो हैं वो बनाए गए हैं। तो माननीय आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के विषय में जो जानकारी आपकी फिगर्स में रखी गई है उसको कृपया एक्सप्लेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister. सभापति महोदय, जो फिगर्स हैं ये ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं, और जहां तक मकान कम हैं या ज़्यादा हैं, डिमांड बेस्ड ये सब सैंक्शन होते हैं, उसी हिसाब से फंड जारी किए जाते हैं। जितनी जिस स्टेट से डिमांड आती है ऑनलाइन डिमांड ली जाती है, बाद में उसका सर्वे कराया जाता है, सैंक्शन होता है। इसलिए किस प्रदेश ने कितने लिए कितने नहीं हैं, PMAY-1 हमारा पहला जो प्रयोग था उसके अंदर बहुत से अंतर आए हैं। अभी PMAY-2 में एक मोटे रूप से हमने तय किया है कि प्रोरेटा जैसी आबादी है उसके हिसाब से उनको सैंक्शन करेंगे। जो प्रदेश की डिमांड नहीं होगी उसको दूसरे प्रदेशों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए ये योजना बहुत साइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं। फिर भी एक जो विषय शेल्टर्स की बात कही गई है, ये शेल्टर्स PMAY का हिस्सा नहीं है, ये NULM का हिस्सा है। उसके नाते से अलग से प्रश्न ये करेंगे तो बताया जाएगा। फिर भी इनकी जानकारी कोई होगी तो ये इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। Now, question number 94, Miss Susmita Devji. 94, sir. Honorable Minister. Statement is laid on the table, sir. First supplementary, Miss Susmita Devji. Thank you, sir. Sir, I had asked a question on the Smart City Mission. An Honorable Minister has replied that as of 2025, this project has not been extended. The question was specifically on Guwahati. 755 crores was spent, sir, in the Smart City Mission for the city of Guwahati. But 2 hours of rain, Smart City of Guwahati becomes the sinking city of Guwahati. Now, given that this mission is closed, I would like to ask the Honorable Minister that, sir, in your ministry, my data shows around 40% of your allocation, 38,000 crore plus, has remained unspent as of March 2026. Sir, is there any proposal from the state government of Assam to fix the serious menace of flash floods in Guwahati, because it has taken the life of a young boy called Avinash in 2024? Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इसमें मालूम नहीं कहाँ से आंकड़ा लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग 48,000 करोड़ ये इसके अंदर फंड जो है सैंक्शन किए गए, जिसमें 47,458 करोड़ रुपए के जो सिटीज़ के जो खर्चे हुए हैं वो स्टेट्स ने क्लेम कर लिए हैं। और इसमें यूटिलाइजेशन का जो जिनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गए हैं 46,231 करोड़ रुपया ये भुगतान किया जा चुका है 15/1/26 तक। इसलिए इस आंकड़े को थोड़ा ठीक कर लें। जहाँ तक किसी भी प्रोजेक्ट का विषय है, ये प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया कि पहला तो स्मार्ट सिटी मिशन, इसके प्रोजेक्ट्स एक डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, एक छोटे पार्ट में इनका काम किया जाता है, क्योंकि टोटल बजट 50% केंद्र का 500 करोड़ रुपया, 50% प्रदेश का यानी 500 करोड़ रुपया, और पहाड़ी राज्यों को 50% 500 करोड़ के साथ 50 करोड़ रुपया, 10% ऐसे 550 करोड़ रुपया। इसमें पूरे शहर की योजनाएं तो सब नहीं बना सकते, फिर भी इसमें यानी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स वर देयर जिनको वहाँ की स्टेट ने चयन करना था कि कौन से इसमें स्कीम में हम लगाना चाहते हैं। वाटर के ऊपर लगाना चाहते हैं वहाँ लगाएं, टेक्नोलॉजी के विषय पर लगाना वहाँ लगाएं। और इसमें भी 3 प्रकार का उसमें मॉडल दिए गए थे। एक है सिटी इंप्रूवमेंट में रेट्रोफिटिंग मॉडल, जो 500 एकड़ की सिटी में यानी एक लार्ज बेस एरिया उसके अंदर लागू किया जा सकता है।
दूसरा है रीडेवलपमेंट मॉडल, जिसमें सिटी का रिन्यूएबल है, उसमें 50 एकड़ का एरिया उसी में किया जा सकता है। और तीसरा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट मॉडल, जिसके अंदर 250 एकड़ जमीन पर और ये उस एरिया के अंदर इस प्रकार के काम कराए जा सकते हैं। इट्स अप टू द स्टेट कि उनकी जो अपनी कमेटीज बनी हैं, उन कमेटीज के आधार के ऊपर उनको कौन सा फुल सिटी का कराना है या कोई पार्ट ऑफ द सिटी कराना है, क्योंकि बजट जो है वो सीमित है और उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे वो रेप्लिकेबल हैं अन्य सिटीज में, या उसी सिटी के अंदर और प्रकार के वैसे प्रोजेक्ट अगर करने हैं तो वो सब कर सकते हैं। इसलिए इनके जो कंपोनेंट्स हैं बहुत बड़े कंपोनेंट में, लेकिन बजट सीमित होने के कारण से ये स्टेट का अपना चयन करने का अधिकार है कि वो किस प्रोजेक्ट में करते हैं, किस में नहीं करते हैं। फिर भी गुवाहाटी के अंदर क्या क्या काम हुए हैं ये सब उत्तर में बताए जा चुके हैं। Second supplementary, Ms. Susimita Dev ji. Thank you, sir. Sir, 65% of the population of the northeastern states live in the state of Assam. Given that Smart City Mission is now a closed project, I would like to ask Honorable Minister that will other towns and cities like Dibrugarh, like Silchar, get the opportunity like a Smart City Mission project to build infrastructure? और माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सर हमें बहुत दुख है, आप सिलचर आइएगा ज़रूर, आपका आमंत्रण है। 5 साल से सिलचर म्यूनिसिपैलिटी में आसाम सरकार ने चुनाव ही नहीं कराए, तो हम compete कैसे करेंगे? यहाँ इलेक्टेड बॉडी नहीं है। सर, इज देयर अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक इनटू Tier 2 and Tier 3 towns and cities of Assam, which has the maximum population in northeastern states? Honorable Minister. सभापति महोदय, विषय केवल स्मार्ट सिटी मिशन का है और ये स्मार्ट सिटी मिशन नंबर ऑफ सिटीज, कौन कौन सी सिटी होंगे ये बिल्कुल तय कर दिया गया था। 100 सिटीज का चयन किया गया था। ये काम केवल इन 100 सिटीज में था और ये दिसंबर 2025 तक इसके सब प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार की ओर से जो बजट फंड जाने थे चले गए थे। ये स्कीम अब बंद हो चुकी है और इस नाते से आगे इस स्कीम के खुले ना होने के कारण से नई सिटी का तो इसमें कोई शामिल होने का कोई विषय है नहीं। अन्य शहरों में जिस प्रकार के काम हैं, बहुत सी हमारी योजनाएं हैं, उसमें अमृत स्कीम भी है, उसमें पीएम हाउसिंग PMAY भी है, ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन है या NULM है, बहुत सी स्कीमें हैं। और अब अर्बन चैलेंज फंड के नाम से 1 लाख करोड़ रुपए का सैंक्शन ये भारत सरकार ने अपने पिछले वर्ष के बजट में घोषित किया था, उनके फंड्स भी जाएंगे। तो अन्य शहरों में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बार के बजट में 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है, ऐसे ही सिटी इकोनॉमिक रीजन में हर यानी रीजन को 5,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का घोषित किया गया है। तो जिन शहरों में काम कराना अगली योजनाओं में कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन जितने काम होने थे सब हो गए हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का और आगे कोई योजना नहीं है। Third supplementary, श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने SPVs यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के भविष्य और ICCCs यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए क्या कदम उठाए हैं? Honorable Minister. सभापति जी, SPV जितने प्रोजेक्ट शहर में थे उसके लिए एक पर्पस व्हीकल बनाया गया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल, लेकिन वो काम जब पूरे हुए हैं तो उस SPV का क्योंकि गठन हुआ है, उससे आगे उसको किस प्रकार से काम में लिया जाए, गाइडलाइंस के नाते से बहुत सी चीज़ें हमने भेजी हैं ताकि SPV का रीपर्पज करने के लिए यानी promoting use of technology in urban management, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कंसल्टिंग सपोर्ट, ये अन्य शहरों के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। इनको और आगे बढ़ाने के लिए The House stands adjourned to meet at 2 p.m.